Hello friends, this is Sarita. Welcome to my YouTube channel Let's Shine in Education. Friends, today we will discuss since, for, from, difference. Difference between these three propositions. Right? Look here, since is a point of time which always denote a point of time, and for is a period of time, and from also a point of time. But difference between these two point of time is since is always used in our past action which has been happening in our past, but from always used in our future. That means we will do something after some days, some months, some hour, or some years. That will denote by the preposition from. So it's point of time and also it is point of time, but difference between these two since and from is from always used in future action which we'll plan today, and since has been happening in our past, that we can denote by this since. Since होउची गोटे पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम भी गोटे पॉइंट ऑफ टाइम, बट सिंस हमर पास्ट रु किछि एक्शन जोटा को हेइची आउ से एक्शन विषय रे एबे भी चाली छी, और ता विषय रे हमें कथा होचंदी, सेथि पई हमें आकु सिंस कहबा. बट फ्रॉम मतलब हमें आगो को किछि करिबा को जाउचंदी, ता विषय रे आजि रे प्लान करूचंदी कि से विषय रे हमें करिबा. तो एटा एठी आमे प्रपोजिशन फ्रॉम यूज करिवा. राइट? जेमिति कि एग्जांपल, आई विल टेक वन एग्जांपल हियर. आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock. It's a point of time. That means 4 o'clock is completely denote the particular time when I started my playing work. So it is also a, look here, have been. That means it is a perfect continuous tense, right? But here look, I will practice football from tomorrow. Tomorrow, that means it will plan for tomorrow. We will do football work, football play from tomorrow. So it's completely denote future and it's past, right? And since, for, the difference between since and for is since is point of time and for is period of time. Period of time means a long duration of time. That means we can say hour, duration of hour, duration of days, duration of months, duration of weeks, years, and some days, few months, right? So period of time always we use for. आमे सबु बेले सिंस को हम पास्ट रो कोनोसी गोटे पर्टिकुलर समय रु काम आरंभ होउतले आमे सिंस व्यवहार करिबा, किंतु जेते बेले से कामटी किछि व्यवधान रे चाली थिबो ताकू आमे फॉर यूज करिबा. बट रिमेंबर फ्रेंड्स, सिंस आउ फॉर ऑलवेज आमे व्यवहार करंती कोठी ना हमर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रे. परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रे आमे सिंस आउ फॉर को व्यवहार करंती, कारण से कामटी पूर्वरु आरंभ होई थाए आ सेटा एबे जाय चली थाए. राइट? बट मु जदि कहबी मु जनवरी मासरु एक्सरसाइज आरंभ करिछि, जनवरी मासरु मु एक्सरसाइज आरंभ करिछि आ एक्सरसाइज मु ए पर्यंत करूछि, ताले मु ताको सेंटेंस रे कोन फॉर्म करिवि? आई हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस January. Since January. I can take one date also here. I have been doing exercise since January 14. Right? That means I denoted complete a point of time, a particular time I denote in my sentence.
but for is always used for period of time. That means I can say here आम ये गोटे एग्जांपल नहीं पारे जमी से एक्सरसाइज विषय मु 4 मास है एक्सरसाइज करी आसुची. I have been doing exercise for 4 months. For 4 months. But here another example here. I have been playing for 3 hours. That means मु 3 घंटा है खेलुची. ता माने मु एबे से विषय कथा होउची आ से जो खेल कामटी मोर 3 घंटा पूर्व आरंभ होइची. जदि एबे दिन 4टा होई थाए ताहले मु कामटी केतेबेले आरंभ करिची 3 घंटा पछकू आमको जीवाक पड़िबो. 3 घंटा पछरु मु से कामटी को आरंभ करिची आ ता विषय एबे मु कथा होउची. तो एठी होउची पीरियड ऑफ टाइम गोटे समय व्यवधान. एटा आवर रे व्यवधान हो पारे, डेज रे व्यवधान हो पारे, मंथ रे भी व्यवधान हो पारे, वीक्स रे भी व्यवधान हो पारे. इयर्स और डेज, फ्यू मंथ्स एथरे आमे फॉर को यूज करिवा. राइट मु कहि परिबी मु 3 वर्ष हला एठी रहूची. देन आई कैन से हियर आई हैव बीन स्टेइंग हियर for 3 years. Right, for 3 years, 4 weeks. Take some example for 4 weeks. I have been doing this work for 4 weeks. मु एई कामटी को 4 मास होला करी आसुची. फ्रेंड्स निहाती भाबरे तम मानकू सिंस आउ फॉर भीतर डिफरेंस जणा पड़ जाइथिबो. सिंस आउ फॉर भीतर डिफरेंस होची सिंस पॉइंट ऑफ टाइम गोटे पर्टिकुलर समय को दर्शाउथिबो. फॉर गोटे पीरियड ऑफ टाइम गोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम रो गोटे ड्यूरेशन व्यवधान को दर्शाउथिबो. बट फ्रॉम वी कैन से सिंस एंड फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन these 2 point of time. Since always used for our past action which completely started in our past. But from we can say it will start in our future, but we plan from today. So these 2 point of time difference is since always is used in our past action which completely started in our past, but from always used in our future point of time. That means we like I will get married on 2026. That means the 2026 a particular year I denote in my sentence use the form. That means mu एठारे कहूची कि मु 2026 रे मोर बाहागर हबो. दैट मीन्स ए जो 2026 जोटा कि मोर फ्यूचर रो एक्शन को दर्शाउची. सो फ्रेंड्स आशा करूची तम मानकू ए वीडियो रे सब किछि डिफरेंस जणा जाइथिबो सिंस फॉर आउ फ्रॉम.